Students, today that we deal about the cell theory. Cell theory was given by the mj Sheldon in 1838, in 1839. Mj Sheldon and Theodore Shibon. The cell theory was given by the M.J. Sheldon and the Theodore Shibon in 1838 and 1839. You know very well that the Sheldon, it was the German botanist, and the Shibon was the German zoologist. Cell theory, what is actually the cell theory is an important generalization in bioscience. According to this theory, all living beings are made up of the cells and their products. So according to the Sheldon and the Shibon, all living beings, whether it is a plant, whether it is an animal, whether it is a microorganism, that they are made up of the cells and their products. Got it? For example, if it is amoeba, it is made up of the cell, and if it is the plant, it is made up of the cell. Got it? So all the living beings, whether it is a plant, whether it is an animal, whether it is a microorganism, that they are made up of the cells. But there would be the criticism in the cell theory. And what is the criticism? Criticism is how do new cells arise? And what is the criticism of the cell theory? मैंने आपको बोला जो सेल थ्योरी किसने दिया? शील्डन एंड शिवॉन ने दिए 1838 से 1839 में दिया। तो शील्डन जो था ये भी जर्मन बॉटनिस्ट था और शिवॉन जर्मन जोलॉजिस्ट था। शिवॉन ने पहले ही अनाउंस किया था जितने भी ये एनिमल्स है दैट दे आर मेड अप ऑफ द सेल्स। गॉट इट? और शील्डन ने भी बोला था दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स, एंड व्हेन दे कंपेयर्ड देयर डाटा दैट दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. And what is the cell theory? Cell theory is an important generalization of bioscience. It means that according to this theory that all living beings that they are made up of the cells and their products. Got it? तो इसमें एक criticism आ गया है और वो criticism क्या था? How do new cells arise? जब इनको पूछा गया कि how do new cells arise? नए cells कैसे बन जाते हैं? What is the criticism of cell theory? Criticism is how do new cells arise? And it is the Rudolf Virchow in 1855 who put forward the cell lineage theory. That is omnis cellulae, which means that what actually the cell lineage theory or omnis cellulae states. Actually, according to this theory, that the cells arises from pre-existing cells. तो जो सेल्स है, जो नई सेल्स बनती है वो पुराने सेल से बन जाती है। तो ये लेके सेल लीनिएज थ्योरी को लेके और सेल थ्योरी को लेके सेल प्रिंसिपल बन गया। क्या बन गया? तो मैं यहां से दिखाऊंगा। जो रुडोल्फ विर्चो है इसने बोला कि इसने सेल लीनिएज थ्योरी दी। He put forward the cell lineage theory or omnicellular. That is, it means cells that arises from the pre-existing. जो नई cells है, for example, is the older one, parental cell. When it divided, it gives rise to the new cells, and these get divided to form the new cells. Got it? So cells arises from the pre-existing cells. Got it? So cell theory को लेके और cell lineage को लेके, cell lineage theory को लेके cell principle बन गया। क्या बनता है? Cell principle. And what is the cell principle?
What is the cell principle? Cell principle state is that it is actually the modified version of the cell theory. What it is? It is a modified version of what it is? Modified version of cell theory. सेल थ्योरी का ये मॉडिफाइड वर्जन है. अकॉर्डिंग टू द सेल प्रिंसिपल क्या बोलता है? दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स ऑफ सेल प्रिंसिपल. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज all living beings are made up of the cells. The first point is all living beings are made up of cells, cells. हर एक लिविंग बीइंग किसका बना है? सेल्स का बना होता है. आया समझ? whether it is a plant, whether it is an animal, whether it is a microorganism, that they are made up of the cells. और दूसरा पॉइंट जो इसका है that the cell develops from the pre-existing cell. So all cells that they develop from the pre-existing cells. The third point of the cell principle is that is cell is the mass of protoplasm. It's a mass of protoplasm. Having a nucleus जिसमें nucleus भी होता है, and it is bounded by the cell envelope से bound करके होता है. So first point is all living beings, whether it is a plant, animal or microorganism, that they are made of cells. All cells arises from the pre-existing cells. The third one, if it is a cell, it is mass of protoplasm and it contains the nucleus and bounded by the cell envelope. The third point is that the fourth point is that the cells have similar structure and metabolism. Every cell that it has a similar structure in the sense of that it contains a protoplasm, cell membrane, nucleus, got it, and metabolism, that's various reactions which occur inside the cell, like gas exchange, digestion, excretion, got it. All these activities that they occur in the cell. It is the fourth point of the cell principle. It is the fourth point of what? Cell principle. What is the fifth point of cell principle? Fifth point is that the function of living organism are due to the functions of living organisms due to the activity and interactions of its cells. So whatever the function of the living organisms do, actually these functions occurs due to the interactions and activities of the cells. When the cells interact among themselves and they shows the function, then it becomes the function of the living organism. So whatever the function of living organism do, it occurs only due to the activity and interactions of the cells. So cells, the sixth point is that the cell is the structural functional. Cell is the structural unit. It is the structural unit of life. It is the structural unit of life. तो सेल जो है ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये स्ट्रक्चर बनाता है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स है, जो उनका स्ट्रक्चर जो है इट occurs due to the cell. So cell becomes the fundamental unit of life. Now what are the various demerits and objections of the cell theory? Cell principle में कितने objections है? There are so many objections of the cell principle or cell theory. And what are these objections and principle? What are these objections and demerits? The first one is that the protozoans are not divisible into the cells. Protozoans जो होते हैं, protozoans, that they have a acellular grade of organization. Acellular grade का मतलब क्या होता है? That the cell, अगर हम बात करेंगे organization, cell की अगर हम बात करेंगे, that they can't divide it to form the tissues, and tissues forms the organ, and organ form the individual. Actually protozoan जो होते हैं, इनको acellular grade of organization होती है.
ये प्लांट्स की तरफ नहीं होते हैं जो डिवाइड होते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, या एनिमल्स की तरह टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं. They show the acellular grade of organization. It is the first drawback of the first point of the cell theory. Got it? The second thing is that according to the cell theory that the cell contains the nucleus. But what about the prokaryotes? अगर हम prokaryotes की बात करेंगे, prokaryotic cells की बात करेंगे, prokaryotic cells have not well defined nucleus. उनको तो nucleus होता ही नहीं है. मगर cell theory के हिसाब से अगर हम देखेंगे, every living organism that they contain the cell, and cell contain the nucleus. If it is a cell, it contains the nucleus according to the cell theory. But regarding the prokaryotic cell, it is a prokaryote that they do not have the well defined nucleus. It is the second objection. Not only the prokaryotic cell, RBC cells have that they lack the nucleus. It is a cell, but still that it lacks the nucleus. Similarly, the CU tube cell is that it is a living cell. It also lacks the nucleus. So prokaryotic RBC and the CU tube cells. Got a CU tube which we observe in the phloem. Got a phloem of the plant is that they what contain that they lack the nucleus. Got it? So it is the second drawback of the cell theory. तो these are the important क्योंकि ये तो नीट एग्जामिनेशन में हमेशा आए हैं. प्रोकैरियोटिक आपको याद रखना है, जो प्रोकैरियोटिक आरबीसी और सी ट्यूब सेल्स होते हैं इनमें क्या न्यूक्लियस नहीं होता है. गॉट इट? इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. द थर्ड पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी इज दैट द ड्रॉबैक ऑफ द सेल थ्योरी इज that is what we call the multicellular organism या multinucleate organisms. According to the cell theory, every living organism that the cell contains the nucleus. But what about those cells which contain multinucleus? Got it? Multinuclei. Like अगर हम देखेंगे like the body of the fungi like Vacheria की अगर हम बात करेंगे that the cell contain many nuclei. Got it? इसी तरीके से राइजोपस, इट इज एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी. इसी तरीके से अल्बुगो की बात करेंगे, इसमें भी बहुत मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होते हैं. इसी तरीके से पिथोरा की बात करेंगे, इसमें भी मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन. सेल थ्योरी बोलते हैं हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, मगर अकॉर्डिंग टू द ये तो ड्रॉबैक निकलता है क्योंकि हमने अगर हम इस वर्ल्ड में देखेंगे लाइक वचेरिया, राइजोपस, अल्बुगो, लॉट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट देयर सेल्स कंटेन द मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन. सो इट इज द ड्रॉबैक ऑफ द सेल थ्योरी. गॉट इट? तो इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन. व्हाट वी कॉल कोनोसिटिक कंडीशन. इसको हम बोलते हैं कोनोसिटिक. दैट इज द सेल व्हिच कंटेन्स द मल्टी न्यूक्लियाई. गॉट इट? इसी तरीके से अगर हम देखेंगे it was the fourth drawback which we observe in the which we see which is the demerits drawback या demerit of the cell theory is. इसी तरीके से अगर हम फोर्थ पॉइंट ड्रॉबैक की बात करेंगे दैट इज द मसल सेल्स जो होते हैं वो भी ड्रॉबैक है. क्या उनमें भी क्या होता है? सिंसेशियम कंडीशन होती है. फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ स्ट्रेटेड मसल and it also contains a multinuclear condition. So it is again the exception and drawback. It is a drawback of the cell theory. तो मसल सेल्स की बात करेंगे वो भी मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन होते हैं. We call this condition as a syncytium. Got it? Similarly, the fifth point, the fifth drawback of the cell theory is that is the viruses. Viruses, very well. Viruses of the acellular grade of organism and do not have the cellular machinery. Even they are considered to be an organism. That जो viruses होते हैं, viruses or the connecting link between the living and non-living. When it takes the host cell, it becomes a living, and it remains the it shows the active metabolism. जब ये किसी लिविंग होस्ट सेल पे जाता है तब जाके ये एक्टिव हो जाता है. तो अगेन जो वायरसेस है इट इज इट हैज अ एसिलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये भी टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाता है. गॉट इट? तो अगर हम इसकी बात भी करेंगे तो वायरसेस भी ड्रॉबैक बन जाता है. गॉट इट? इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो सेल थ्योरी है इट रिमेन साइलेंट. साइलेंट about origin of life.
ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में ये कुछ नहीं बोलता है, साइलेंस अबाउट द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी जो है, मैंने आपको बोला जो सेल थ्योरी है, इट रिमेन साइलेंट अबाउट द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ये नहीं बोलता है कि हाउ द ऑरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट्स। गॉट इट? सो वन मोर, द सेवंथ पॉइंट इज दैट इज very well regarding the viroids. 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 What are the viroids? Got it? Viroid is, अगर हम देखेंगे, these are the small like RNA particles, small circular having the nucleic acids. Got it? Molecular. But replicates, अगर हम देखेंगे, that they replicate into the cell cytoplasm of the plants and the animals. आया समझ में? तो अगर हम देखेंगे वायराइड्स या हो, या एट्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे प्रियॉन्स की बात करेंगे, प्रियॉन्स की अगर हम बात करेंगे, वायराइड्स, वायराइड जो होते हैं स्मॉल वायरस होते हैं। आया समझ में? ये भी अगर हम देखेंगे, इनको भी एसेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रियॉन्स आर द प्रोटीनिशियस पार्टिकल, एंड दीज प्रोटीनिशियस पार्टिकल व्हेन they enter into the host cell, they become active, they replicate, they do not have the cellular grade of organization, they cause lot of disease in the cattle. Got it? ये भी अगर हम देखेंगे, it is also what we call, it is also the exceptions of the cell theory। आया समझ में? तो अगर हम देखेंगे, तो these where you have to remind it, you have to just remember these points, demerits of the cell principle or cell theories। ये आपको हमेशा याद रखना है। मैंने पहले ही आपको बोला प्रोटोजोन्स के बारे में, मैंने बोला प्रोकैरियोटिक्स के बारे में बोला, मल्टीन्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स के बारे में बोला, ये सारे ड्रॉबैक्स है। वायरसेस के बारे में बोला, या मसल सेल के बारे में बोला, या वायराइड्स के बारे में बोला। मैंने आपको बोला ये स्मॉल वायरस लाइक आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल सर्कुलर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, और क्या करते हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आया समझ में? तो ये आपको याद रखना है, दीज वेर द एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थ्योरी। नाउ द सेकंड टॉपिक इज दैट इज व्हाट अबाउट द सेल डॉक्ट्रिन और सेल प्रिंसिपल। सेल डॉक्ट्रिन और सेल प्रिंसिपल क्या बोलती है?